Jai Hind, dear students of class 12th. Welcome you all in geography class. Today I am going to start unit 3rd, chapter 9 of book 2, India, People and Economy. And this lesson is for this year is really much more important because certainly two questions of one of 3 marks and one of 5 marks will come. The name of the lesson is Planning and Sustainable Development in Indian Context. Planning is not a new term for us. We all know that about this particular terminology, planning, as it is a part of everybody's uses. Anything what we plan to do, we set time limit to the different segment of plan. How we have to compile it, like that. So judicious use of time in a proper manner that without wasting, that is the planning. So you must have used it with reference to the preparation of your examination even or visit to hill station कि कितना समय कहाँ रहेंगे, कितना समय कहाँ बिताएंगे, कैसे कैसे यहाँ की सीनरी को कैच करेंगे कैमरे में, likewise number of things you have planned according to time segment. So it involves the process of thinking. So planning involves process of thinking, formulation of a scheme or program and implementation of a set of actions to achieve some goal. अगर सोचो कोई एक गांव है पिछड़ा हुआ है, वहां पे डेयरी फार्म डेवलप करना है, डेयरी फार्म लगाने के लिए पैसे की जरूरत होगी, कैसे करना उसके लिए एक प्लान तैयार करना होगा, कैसे वहां पे हाइब्रिड काउस या बफेलोज को खरीदा जाए, कैसे कैपिटल वहां पे लाया जाए, कैसे करके उसको साइंटिफिक मेथड पे डेवलप किया जाए, इसके लिए क्या होगा, प्रॉपर प्लान बनाते हैं, प्लान और प्रोग्राम, और साथ ही साथ इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, और इम्प्लीमेंटेशन भी होता है द सेट ऑफ एक्शन टू अचीव द सम गोल. अगर डेयरी फार्म बना रहा है तो गोल क्या है, टू सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर. Simply, though it is a very broad term, in this chapter it has been used with reference to the process of economic development. It is thus different from the traditional hit and miss method by which reforms and reconstructions are often undertaken. Generally, there are two approaches to planning. There are basically two approaches of planning. First, sectoral planning, and second, regional planning. Sectoral planning means formulation and implementation of set of schemes, that is called plans or programs aimed at development of various sectors of the economy such as agriculture, irrigation, manufacturing, power, construction, transport, etc. There is no uniform economic development over space in any country. Some areas are more developed and some lag behind. This uneven pattern of development in India, you can take the case of Punjab and Haryana. They are, as per availability of minerals, they are poor, you can say poor state because there is lack of availability of mineral resources. On the other hand, mineral rich state like the Jharkhand, Chhattisgarh, they are economically far behind than the Punjab and Haryana. So there is no uniform economic development over space in a country. Some areas are more developed and some lag behind. This uneven pattern of development over space necessitates that the planners have a spatial perspective to draw the plans to reduce regional imbalances in development. So the sectoral planning, we are trying to develop sectors of the economy, but in regional planning, we are finding out the region, which region actually is a geographical region having similarities and same type of economic development, like Eastern Uttar Pradesh of UP, locally called Purvanchal. It is a backward area in Uttar Pradesh. On the other hand, Western UP is advanced than Eastern UP.
So there are regional variation in development. Why Telangana has demanded for a separate state? Because in Andhra Pradesh, the part of Telangana, today Telangana as a state, was not developed well. So they have demanded for a separate state. Likewise, Chhattisgarh, Uttarakhand, Jharkhand, they have come in existence because for developmental issues. Regional ignorance were there in plans. Those regions are not covered well. This uneven pattern of development over spaceless state that the planners have a spatial perspective and draw to plans to reduce regional disparity. This type of planning is termed as regional planning. And regional planning is quite good because we are looking after the availability of resources of that particular region, similarity of the cropping pattern, similar type of people, similar type of availability of resources, and accordingly we are planning for development. So regional planning approach is good. It reduces the regional disparity because regional disparity in India is very common. Some states are very advanced and some states are very poor. So in India, we have started many such regional planning. Based on that, there is a overview of planning perspective in India. I am concluding in little. India has centralized planning and task of planning in India has been instituted to the planning commission now called Niti Aayog. Is a statutory body headed by the Prime Minister. He is the head and has a deputy chairman and members. The planning in the country is largely carried out through 5-year plans because after independence, on the line of Russia, Pandit Nehru, our first Prime Minister, he has started 5-year plans in India. The first 5-year plan was launched in the year 1951 and covered the period 51 to 52, 55 to 56. Second and third 5-year plans covered period of 56 to 57 to 60 to 61 and 61 62 to 1965 and 66 respectively. Two successive drought during mid 60s between 1965 and 66 and 66 to 67 and war with Pakistan in 1965 forced plan holiday in 1966 to 67 and 1968 to 69. This period was covered by annual plans. 5-year plan nahi lag paye, which were also termed as rolling plans. The fourth 5-year plan being in 1969 and 70 and ended in 1973 and 74. Following these 5-year plans began in 1974-75, but it is terminated by the government 1 year earlier in 1977-78. Sixth 5-year plan took off in 1980s. The seventh 5-year plan covered period between 1985 to 1990. Once again, due to political instability and initiation of liberalization policy, the 8th 5-year plan got delayed and it covered the period 1992 to 1997. The 9th 5-year plan covered the period 1997 to 2002. The 10th 5-year plan covered period from 2002 to 7. The 11th plan covered 2007 to 2012 and 12th 5-year plan initiated in 12 with a focus on faster and more inclusive and sustainable growth. So these 5-year plans, which are designed on the basis of Russian 10-year plan by Pandit Nehru, actually to accelerate the growth of economy, not only industry but also the agriculture, manufacturing, infrastructural development, all. So develop the entire spectrum of the society. The plans have come in existence, but due to the leak work in implementation of plans are not successfully completed their task, have not had not achieved
goal what they have been made for. So what happens? Some of the new plan come in existence like the target area planning. The planning processes has to take special care of those areas which have remained economically backward, as in case of Uttar Pradesh, Purvanchal. After the division of Andhra Pradesh, now we know that Telangana is there, but before that the region was known as Dandakaranya, a backward region. As you know, the economic development of a region depends upon its resource base, but sometimes resource rich region also remain backward like Chhattisgarh, Jharkhand, etc. The economic development also requires technology as well as investment besides the resource. With the planning experience of about 1.5 decades, it was realized that the regional imbalances in economic development were getting accentuated. In order to arrest the accentuation of the regional and social disparity, जो ये क्षेत्रीय और सामाजिक अंतर रहा था विकास में, उसको कम करने के लिए द प्लानिंग कमीशन इंट्रोड्यूस्ड द टारगेट एरिया एंड टारगेट ग्रुप approaches to planning. Some of the examples of programs directed towards the development of target area of command area development program, drought prone area development program, the small farmers development agency SHABDA, the marginal farmers development agency MABDA, which are the examples of target group program. In the 8th 5-year plan, special area programs were designed to develop infrastructure in hill areas, northeastern states, tribal areas and the backward areas. So the first I am going to discuss the hill area development program. That's the name, hill area. कहाँ के लिए बनाया गया है? पहाड़ी राज्यों के लिए, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, और मोस्टली वहाँ के लोग क्या होते हैं? ट्राइबल. Hill area development programs were initiated during 5th 5-year plan covering 15 districts comprising of all the hilly district of Uttar Pradesh, now called Uttarakhand. ये जो 15 उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट थे, ये बाद में अलग होकर उत्तराखंड बन गए. Bikir Hills and North Kachar Hills of Assam, Darjeeling district of West Bengal and Nilgiri district of Tamil Nadu. The National Committee on Development of Backward Area in 1981 recommended that all the hill areas of the country having height above 600 meter, एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया कि हाइट कितना होना चाहिए, above 600 मीटर, नॉट कवर्ड अंडर ट्राइबल सब प्लान, और वहां भी कोई ट्राइबल सब प्लान लागू नहीं होना चाहिए. उसी जगह पे उसको हम ट्रीट करेंगे बैकवर्ड हिल एरिया, जहाँ पे कोई भी ट्राइबल सब प्लान लागू नहीं है और उसकी हाइट भी 600 मीटर से ज्यादा है, यानी मीन सी लेवल से ज्यादा है, मीन सी लेवल से 600 मीटर ऊंचा. The detailed plans for the development of hill areas were drawn keeping in view their topographical, ecological, social and economic condition. ध्यान दिया गया विशेष करके 4 बातों पे. टोपोग्राफी, किस तरह का टेरेन है, उबड़ खाबड़ है, प्लेन है, स्लोपी है. इकोलॉजिकल एस्पेक्ट, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन तो नहीं हो गया है, सोशल बैकवर्डनेस तो नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशंस लोगों की बहुत पुअर तो नहीं है. लाइक दिस, these programs aimed at harnessing the indigenous resources of the hill areas through development of horticulture. और खास करके ध्यान रखा गया कि जो हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम किसी भी एक एरिया के लिए लाया गया, वहां पे वहां अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं उसी के बेस पे वहां का डेवलपमेंटल वर्क शुरू किया जाए. जैसे हिल एरियाज में बहुत सारा वेजिटेशन है, उसके बेस पे वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं, चिलीज की खेती वगैरह होती है, हॉर्टिकल्चर, प्लांटेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे कि टी क्रॉपिंग. दार्जिलिंग में, असम में बहुत सारे जगह, मिकिर हिल्स में, नॉर्थ कचार में टी प्लांटेशन हुआ है. एनिमल हस्बेंड्री, खास करके सीप रियरिंग, पोल्ट्री, मुर्गी पालन, फॉरेस्ट्री एंड स्मॉल स्केल एंड विलेज इंडस्ट्री. स्मॉल स्केल में
पिकल्स बनाना, पापड़ बनाना, अचार वगैरह बनाना, ये सब जो इंडस्ट्री है, ये सब चीजों को लाया गया विद द अवेलेबल लोकल रिसोर्सेस। दूसरा आया प्रोग्राम ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। In India, drought is a common phenomenon. It is a disastrous condition each and every year. Some regions where there is a problem of flood. On the other hand, some regions are there in our country facing the problem of drought. This program was initiated during the fourth five-year plan with the objective of providing employment to the people in drought-prone areas and creating productive assets. जो सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लोग थे उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना और उनके लिए संपत्ति तैयार करना इसका मुख्य लक्ष्य था ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का। इनिशियली दिस प्रोग्राम लेड एम्फेसिस ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ लेबर इंटेंसिव सिविल वर्क्स बट लेटर ऑन, पहले तो शुरुआत किया गया रोड बना दो, रेलवे लाइन बना दो, सिविल वर्क पे काम किया गया, बट लेटर ऑन इट एम्फेसाइज्ड ऑन इरिगेशन प्रोजेक्ट। बाद में ध्यान दिया गया नहीं केवल रोड बनाने से विकास नहीं होगा, इरिगेशन चाहिए, तब तो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा। लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम इनिशिएट करना पड़ेगा, लैंड टेस्टिंग करनी होगी, सॉइल की प्रोडक्टिविटी क्या है वो देखना होगा, एफॉरेस्टेशन करना होगा, ग्रास लैंड डेवलपमेंट करना होगा, क्रिएशन ऑफ बेसिक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि पेवमेंट, रोड्स वगैरह ये सब बनानी होगी, मार्केट बनाना होगा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देनी होगी, लाइक दैट। National Committee on Development of Backward Areas reviewed the performance of this program. It has been observed that this program is largely confined to the development of agriculture and allied sector with major focus on restoration of ecological balance. मुख्यतः ध्यान दिया गया एग्रीकल्चर के विकास पे और जो इकोलॉजिकल डैमेज हुआ था उसके रिस्टोरेशन पे ध्यान दिया गया। Since growing population pressure is forcing the society to utilize the marginal land for agriculture, जो marginal land बेकार की जमीन थी उसको खेती के लिए लाया गया and thereby causing ecological degradation. अब पेड़ों की कटाई हुई, ecological degradation भी हुआ। There is need to create alternative employment opportunities in the drought prone area. क्या कर सकते हैं ड्रॉट प्रोन एरिया में, कौन सा अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं उसको ध्यान दिया गया। और क्या किया गया, द अदर स्ट्रेटजीज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दीज एरियाज इंक्लूड एडॉप्शन ऑफ इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट अप्रोच एट माइक्रो लेवल। बहुत से छोटे छोटे जगह पे, हर जगह छोटी छोटी नदी नालिकाएं हैं, उनके पानी को रोक के उसमें फिश ब्रीडिंग कराना, उसी पानी से एग्रीकल्चर में इरिगेशन प्रोवाइड करना, ये सब काम करना, एफॉरेस्टेशन करना, ग्रीनरी बढ़ाना, इस पे ध्यान दिया गया। द रिस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस बिटवीन वाटर, सॉइल, प्लांट एंड ह्यूमन एंड एनिमल population should be a basic consideration in the strategy of development of drought prone areas. Planning Commission of India 1967 identified 67 districts entire or partly, या तो पूरी तरह से या उसके कुछ हिस्से को लेके, of the country prone to drought. Irrigation Commission in 1972 introduced the criteria of 30% of irrigated area and demarcated the drought prone area. एक क्राइटेरिया बनाया गया इरिगेशन कमीशन के द्वारा, इंट्रोड्यूस्ड हुआ 1972 में। द क्राइटेरिया ऑफ 30% ऑफ इरिगेटेड एरिया एंड डिमार्केटेड द ड्रॉट प्रोन एरिया। अगर 30% से भी कम है इरिगेटेड एरिया तो ड्रॉट प्रोन है। ब्रॉडली द ड्रॉट प्रोन एरिया इन इंडिया स्प्रेड ओवर सेमी एरिड एंड एरिड एरियाज ऑफ राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा इन महाराष्ट्र, Rayalaseema, Telangana, Rayalaseema now Andhra Pradesh and Telangana is now state, plateaus of Andhra Pradesh, Karnataka plateau, highlands, etc. Tamil Nadu and drought prone areas of Punjab, Haryana and northwestern Rajasthan as well as some parts of Uttar Pradesh like Bundelkhand region. So some of the case studies are introduced to your book and it is very important to know about this. The first case study I am going to discuss is the case study Integrated Tribal Development Project in Bharmar region
Bharmar region is there in Himachal Pradesh. Very first, you should know that about the location of the region. This region lies between 32 degree 11 minute north and 32 degree 41 minute north latitude and 76 degree 22 minute east to 76 degree 53 minute east. A small area it is. Longitudes spread over an area of only 1818 square kilometer. The region mostly lies between 1500 to 3700 meter above the mean sea level. ऊंचाई बहुत है, पहाड़ी क्षेत्र है. The region popularly known as homeland of गद्दीज, और भरमौर के इस गद्दी यहाँ के लोगों को बोला जाता है गद्दी, GADDIS, गद्दीज. वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटी होती है गद्दी. Surrounded by lofty mountains of all sides, it has पीर पंजाल in north and धौलाधार in south. और एक किसके बीच में है? पीर पंजाल नॉर्थ में है और धौलाधार जो हिमाचल की रेंजेज है ये इसके साउथ में है, बीचों बीच में पड़ा हुआ है. In the east, extension of Dhauladhar coverage with the Pir Panjal near Rohtang Pass, the river Ravi and its tributaries, the Budhin and Tundahan, drain the territory and carve out deep gorges. और बहुत ये सब जो ट्रिब्यूटरीज हैं यहाँ पे gorges बनाती हैं. एरिया रियली ब्यूटीफुल है. The rivers divide the region into 4 physiographic division called, और रिवर के वजह से जो डिवीजन हुआ है रीजन का 4 भाग में हुआ है. होली, खानी, कुगटी एंड टुंडा, 4 रीजन में बांटा गया है. भरमौर रीजन को कौन कौन से हैं? होली, खानी, कुगटी, टुंडा. भरमौर experiences freezing weather condition and snowfall in winter. Its mean monthly temperature in January remains 4 degrees Celsius and July 26 degrees Celsius. So you can imagine we are talking about a region which is a hilly area located between Pir Panjal in north and Dhauladhar in south, having altitude 1500 to 3700 meter high above the mean sea level, and because of carving rivers it is mainly divided into 4 parts: Holi, Khani, Kukti and Tunda. So we are going to discuss about the Bharmor case region. Each and every year I have seen 2 questions from this lesson are very important. One, the case study of Indira Gandhi Canal, and second, what we are going to discuss, case study integrated tribal development project of Bharmor region, Himachal Pradesh, certainly come. And this year, as some lessons are omitted, board has deleted some lesson, will not come in evaluation. So map based question from this lesson will come certainly 100%. So this lesson you have to prepare all without any selectivism कि हमको इतना ही पढ़ना है, नहीं, पूरा का पूरा ये लेसन बहुत अच्छी तरह से रेडी करोगे, आपका बोर्ड बहुत अच्छे से कवर करेगा. कम से कम एक 5 मार्क क्वेश्चन जरूर आएगा और एक 3 मार्क क्वेश्चन भी इससे आएगा. भरमौर ट्राइबल area comprise Bharmor and Holi तहसील of Chamba district of Himachal Pradesh. भरमौर रीजन कौन सा है? भरमौर और होली तहसील है चंबा डिस्ट्रिक्ट की. It is notified tribal area since November 21, 1975. Bharmor is inhabited by गद्दी. वहाँ के लोकल लोगों को इनहेबिटेंट्स जो हैं उनको बोलते हैं गद्दी. जाति होती है, ट्राइबल कम्युनिटी है गद्दी. A tribal community who have maintained a distinct identity in the Himalayan region as they practiced transhumance and conversed through Gadiali dialect. उनको कोई अपनी भाषा नहीं है, वो एक बोली में बात करते हैं. डायलेक्ट माने बोली होती है, उसको बोलते हैं गदियाली. और ये लोग ट्रांसह्यूमेंस करते हैं, जानवरों के साथ गर्मियों में पहाड़ के ऊपर चले जाना और सर्दियों में वैली में आ जाना. This seasonal migration of herder along with their cattle uphill during the summers and downhill during the winters is known as transhumance. Do you know the name of Bharmor is derived from Sanskrit word Bharmor. In this book, Bharmor has been used to retain the
कोलोनियल फ्लेवर, भरमौर जो है संस्कृत का नाम है। Burma tribal region has harsh climatic condition, no doubt, as I have told you. Severe winters are there. The mean monthly annual temperature in the month of July 26 degree, you can imagine. So for low resource base, fragile environment भी fragile है, थोड़ा भी डिस्टर्ब करेंगे environment, पूरा का पूरा हिमालयन environment ही fragile है. This factor have influenced the society and economy of the region. According to 2011 census, the total population of Bharmor subdivision was only 39,113. That is 21 persons per square kilometer. It is one of the most economically and socially backward areas of Himachal Pradesh. Historically, the Gatis have experienced geographical, political isolation and socio-economic deprivation. गद्दीज लोगों के साथ हमेशा आइसोलेशन के तरह व्यवहार किया गया है, पॉलिटिकली भी, खास करके पॉलिटिकली, ज्योग्राफिकली तो आइसोलेटेड थे ही, पॉलिटिकली भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में भी उनकी डिप्राइवेशन की स्थिति है। और सिचुएशन डिप्राइवेशन, व्हाट इज डिप्राइवेशन? इट इज स्टेट वेयर द नीड फॉर फुलफिलिंग डिमांड इज नॉट अवेलेबल. द इकोनॉमी इज लार्जली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर and allied activities such as sheep and goat rearing. sheep और goat rearing करते थे, एग्रीकल्चर मेन है, जहां कर पाते थे एग्रीकल्चर. इसके अलावा the process of development of tribal areas of Bharmor started in 1970s when Gatis were included among scheduled tribes. 1970s में पहली बार गद्दीज को scheduled tribes का दर्जा दिया गया. Under the fifth five-year plan, the tribal sub-plan was introduced in 1974. The Bharmor was designated as one of the 5 integrated tribal development project (ITDP). शॉर्ट में बोलते हैं इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम को ITDP in Himachal Pradesh. This area development plan was aimed at improving the quality of life of the Gaddis. गद्दियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस पे काम शुरू हुआ. And the narrowing the gap in the level of development between the Bharmor and other areas of the Himachal Pradesh. This plan laid the highest priority on development of transport and communication, agriculture and allied activities, and social and community services. The most significant contribution of tribal sub-plan in Bharmor region is the development of infrastructure in terms of school, healthcare facilities, potable water, road, communication, etc. ये सब facilities बढ़ी, but the villages located along the river Ravi in Holi and Khani, चार पार्ट में बांटे थे ना, होली, खानी, कुंडा, तो होली और खानी खास करके मेन बेनिफिशियरीज है. यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का ज्यादा डेवलपमेंट हुआ. द रिमोट विलेजेस लाइक टुंडा एंड कुकटी, और जो दो रीजन बचा टुंडा और कुकटी एरियाज स्टिल डू नॉट हैव सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर. अभी भी उनका पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं हो पाया है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए. The social benefits derived from ITDP integrated tribal development program include tremendous increase. फायदा क्या क्या हुआ देखो. Tremendous increase in literacy rate, improvement in sex ratio, decline in child marriage. बच्चियों की शादी होती थी रुक गई, लिटरेसी बढ़ा. Female literacy rate in the region increased from 1.88, 2 से भी कम था in 1971, अब हो गया है 65% एज पर डेटा 2011. तो जहां 2% फीमेल लिटरेसी था बढ़ के 65 हो गया है. द डिफरेंस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स इन लिटरेसी लेवल, दैट इज जेंडर इनइक्वालिटी, हैज आल्सो डिक्लाइंड. ट्रेडिशनली गद्दीज हैड सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चरल कम पैस्टोरल इकोनॉमी. वो लोग जीने के लिए कुछ अनाज उगाते थे, सब्जियां उगाते थे, साथ में कुछ जानवर भी पालते थे और अपने जीवन को जीते थे.
having emphasized on food grains and livestock production. But during the last 3 decades, क्या change आया है? 20th century, the cultivation of pulses and other cash crops has increased in Burma region. अब वो दाल उगाने लगे हैं, कैश क्रॉप जिसको मार्केट में बेच के पैसा मिलता है वो उगाने लगे हैं. But the top cultivation, the crop cultivation is still done with traditional technology. Technologically अभी वो बहुत पीछे हैं. The declining importance of pastoralism in the economy of the region can be gauged from the fact that the present only about 1/10 of the total household practice transhumance. अब धीरे धीरे ट्रांसह्यूमेंस का भी सिस्टम खत्म हो गया. लोग अदर एक्टिविटी में आने लगे, एग्रीकल्चर में आने लगे, कैश क्रॉप प्रोडक्शन करने लगे, दूसरे काम करने लगे और इसीलिए ट्रांसह्यूमेंस भी बहुत कम हो गया है. अबाउट 10% गद्दियाली, लगभग 3-4 हजार लोग अब ये काम कर रहे हैं. But the Gaddis are still very mobile and a sizable section of them migrate to Kangra and surrounding areas during winter to earn their living from wage labor. जब विंटर में काफी सर्दी पड़ती है भरमौर रीजन में तो यहाँ के गद्दी लोग चले जाते हैं शिमला और कांगड़ा वगैरह में जहाँ टूरिज्म का समय होता है वहाँ पे वेज लेबर के रूप में काम करते हैं. So up to this we have discussed. In next period we will discuss about the sustainable development. I hope you have enjoyed the lesson today. Thank you. Have a nice day.